Hello and welcome everyone to Imavate Academy. My name is Sunando Debnath. We have discussed 4 lectures in this chapter, Matrices, which are arranged in a proper playlist, in a proper sequence. In my channel, you can go to my playlist section and you will find that there is a playlist named Matrices where the previous 4 lectures are uploaded. Make sure to watch them before proceeding with this lecture, which is lecture number 5. So let us continue with lecture 5. I hope you all have watched the previous lectures and only then you are proceeding with this lecture. So as in the previous lecture, lecture 4, I had written this question that I would be continuing in the next lecture with this question. So what we are going to do in this question, children, I am going to find a matrix. This is a new type of question which we have not discussed earlier. So आज हम इस लेक्चर में एक नया टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Okay, so you see there is a matrix equation given. Matrix X plus matrix B is equal to matrix C minus matrix A. Now, how do we know that these are matrices? These X, B, A, and C are not variables, are not numbers. They are matrices. It is written in the question that matrix A is this matrix, 2 minus 3. So when A is here, that means it is the matrix. B is this matrix, C is this matrix, and इन्होंने बोला find matrix X in each of the following cases. तो हमें matrix X निकालना है. Let us take the first question. The first question is X plus B, and these are not variables, means these are not single numbers. Okay, X plus B, these are matrices. This is equal to C minus A. I have to find matrix X. So what will I do? I will send this B on the other side and only keep X in the left side as we do with the simple numbers. तो C minus A and यहाँ पे ये minus B उधर जाके minus plus B उधर जाके minus B हो जाएगा. So this is the thing, C minus A minus B. Now matrix X का मुझे order नहीं पता. जिस मैट्रिक्स को मुझे निकालना है उसका एक ऑर्डर मुझे पता होना चाहिए. आई डोंट नो द ऑर्डर, बट इट इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर, टू नो द ऑर्डर. You see, matrix subtraction is only possible if the matrices are in same order. So if I have subtracted matrix C and minus matrix A, it means C and A must have the same order, and it is definitely that. C का भी order देखो, there is 1 row and 2 columns, so 1 into 2 है इसका order. A का भी 1 into 2 है. So C minus A is therefore possible because both C and A are of the same order, and then that one is subtracted with B. So B must also have the same order, so 1 cross 2 है. And तीनों matrices का order 1 cross 2 ही है, so X का भी order 1 cross 2 ही होगा. So we have now come to know the order of X is 1 cross 2. This is the first trick. This is the first technique to solve a matrix equation where you have to find the matrix. What is the first step that you have to know? You have to predict. Predict का मतलब अंदाजे नहीं. You have to be, you have to rather investigate and know the order of the matrix which you are trying to find. So you have to identify the or predict the order. प्रेडिक्ट भी तो कभी कभी प्रेडिक्शन गलत होता है, इसलिए बेटर हम प्रेडिक्ट ना लिख के लिखें नो. You have to know. How do you know it? By using these tricks which I have told you, that 1 cross 2, 1 cross 2, 1 cross 2 तीनों है, तो x का भी 1 cross 2 ही होगा. So you have to know the order. You have to investigate into the question, into the equation, and you have to know the order of the matrix which you are going to find. Means in our case matrix X. Once you do that, then our job is 90% solved. यही है पहला स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. तो अब हम x के जगह पर मैं a या b लिख रहा हूं, या कोई भी सिंबल लिख सकता हूं, mn लिख सकता हूं. चलो मैं यहाँ mn लिख रहा हूं. हालांकि a b भी लिखा जा सकता है बिकॉज दिस a is small a and this a is capital A, and so there is no problem. These are different symbols. फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि सर क्वेश्चन में तो a भी लिखा हुआ है, better you use another symbol. So I would better use such symbols which are not present anywhere. I am choosing M and N. Now, why am I not writing M and N like this? Because this would mean 2 cross 1 matrix. Our matrix is not 2 cross 1. Our matrices are 1 cross 2. This
X matrix is 1 cross 2. We have detected, we have now got to know the order of this matrix. तो हमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। तो हमने 1 क्रॉस 2 है, इसलिए यहां पर एक एलिमेंट होगा, यहां एक एलिमेंट होगा, मींस देयर वुड बी 1 रो एंड 2 columns. Now this matrix is C, is which is minus 1 4 C, then minus A is 2 minus 3, ठीक है, and then minus B, तो हमने यहाँ B भी लिख दिया, minus B is this one 0 2. Now simply solve this further. तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर हम 0 2 को भी कर लेंगे, या एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सी एक साथ हम कर रहे हैं तीनों को एक साथ, -1 -2 -0, तो हम एक साथ लिखेंगे -1 -2 -0, ठीक है। देख लिया कैसे हमने किया, -1 -2 -0, और इसके साथ जो दूसरा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, व्हाट वुड दैट बी, 4 -3 -2, 4 -3 -2, लिखो इसको, 4 -3 -2, इनफैक्ट दिस 4 -3 वुड बिकम 4 + 3, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -1 -2 इज -3, और ये -0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो सिंपली दिस इज -3, एंड 4 + 3, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 4 + 3 विच इज 7, 7 - 2 is 5, तो दिस इज 5, तो Mn आ गया। नाउ टू मैट्रिसेस, these two matrices are equal, बीच में equal to sign है, which means what, M is -3 and N is 5, and therefore our X matrix, जो हमारे X के जगह हमने Mn लिखा था, वो आ गया। our answer क्या है, therefore matrix X is, M के जगह -3 लिख दिया और बगल में n है, n के जगह 5 लिख दिया, हेंस आ गया हमारा matrix -3 5. This is the matrix which we had to find. Very very simple. सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे। Our second equation is a minus x is equal to b plus c, और मेरे साथ साथ बनाओ, then only you will be benefited. हमें निकालना है x को, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। हम a अपने स्थान पर विराजमान है, इधर से मैं इस b को ले आता हूं और c को भी ले आता हूं, सो b becomes -b and this plus c also becomes -c, और मैं इस -x को उधर भेज दिया, तो इट इज सिंपली x। अब मैं सिंपली x इज इक्वल टू a minus b minus c वैसे लिख सकता हूँ, राइट? मैंने x को जो LHS RHS में था उसको LHS बना दिया, और a minus b minus c को मैंने RHS बना दिया, बात तो सेम। अब मुझे बस सॉल्व करना है, ये जो x है इसका ऑर्डर मुझे ऑलरेडी अभी पता है, बिकॉज a b एंड c तीनों मिलकर एक इक्वेशन बनाया, they are subtracted, and it is only possible if they have the same order. So a also has 1 cross 2, b also is of 1 cross 2, and c is also 1 cross 2 order, so x is also 1 cross 2. तो हम बिल्कुल इसको 1 cross 2 एक कोई भी वेरिएबल्स लिख दिया mn, and this is 1 cross 2. Now as we had solved the previous question, we would do this question also. So mn means this is the x is equal to a. So the given a is 2 minus 3, then minus b, b is 0 2, minus c is, देख लो पीछे एक बार, c is -1 4, -1 4। अब बस वैसे ही सॉल्व करेंगे, 2 minus 0 minus -1, 2 minus 0 minus -1, 2 minus 0 minus -1, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है, -3 -2 -4, -3 -2 -4, लिखो इसको, -3 -2 -4. So this is 2 minus 0, and this minus minus is plus, so 2 minus 0 plus 1, which is 3, and this
-3, -2, -4. This is -9. And hence, we have got matrix X is 3 and -9. Isn't it very simple and very important as well? I'm telling you, board type question. Write down the next question where also again we have to find a matrix. Given A is equal to -1, 2, 0, -4, and B is equal to 3, -3, -2, 0, and find the matrix X in each of the following. यहाँ पे first question is A plus X is equal to B, and the second question is A minus X is equal to B. दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, जिसमें दो पार्ट्स थे वैसे ही है. Here you have been given matrices A and B and आपको matrix X निकालना है. Let's take the first question, first equation. A plus X is equal to B. Now, as we had done in the previous case, हम X को subject बनाएंगे. That means इस A को उधर भेज देंगे, so B minus A हो जाएगा. Now we have to detect, we have to find out, we have to investigate the equation and know what is the order of X. Before knowing the order of X, we cannot, proceed with the question. तो हमें ये करना ही पड़ेगा. Without knowing the order of the X, we cannot proceed with the question. But now, before I proceed with the question, I want to make a small request and then I will proceed with the question. If you are, studying with my videos and you are finding them useful, then I have a request that you press the like button and also share these videos with your friends. Subscribe to the channel, of course, if you don't want to miss out any lecture, and press the bell icon. That is very important. And that's it. So support me and by pressing the like button and sharing the videos. Now, let me continue with this equation. So X is equal to B minus A. If you see B is of the order 2 cross 2. ये ऑर्डर वगैरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है. इफ यू हैवंट वॉच देम, वॉच दोज प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ. मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि प्लेलिस्ट में सारे अच्छे से अरेंज्ड है, उनको देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा. सो बी इज 2 cross 2 order, and if you see A is also 2 cross 2, so if 2 cross 2 is multiplied with 2 cross 2, and that is possible, अगर दो एरेस, दो मैट्रिसेस को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो उनका ऑर्डर सेम होगा तभी पॉसिबल है, एंड सेम है, राइट? दोनों 2 cross 2 ही है, एंड दैट इज इक्वल टू X. इनका सब डिफरेंस is equal to X, so X must also be 2 cross 2. So now we know that X is also 2 cross 2 matrix. अब ये पता चल गया, हमारा काम हो गया. Let X is equal to, तो 2 cross 2 में 4 पोजीशंस होंगे. यहाँ पे तुम लिख दो इसका नाम M N P Q, इस तरह से लिख सकते हैं. कोई भी वेरिएबल्स दे सकते हैं, ABCD भी नाम दे सकते थे, मैंने MNPQ दे दिया. सो नाउ X के प्लेस पे आई विल राइट MNPQ is equal to B minus A, right? So B is 3 minus 3 minus 2, 0, minus A. A is -1, 0, 2, -4. फिर से वही बोरिंग सा काम हमें करना ही है. 3 minus -1, 3 minus -1, which is actually 3 plus 1. Next step में 3 plus 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा. Next, this side we have -3 minus 0. यहाँ पे -2 -2 -2 -2, this -2 -2, ठीक है, इजी है. देन 0 minus -4, 0 minus -4, मतलब ये +4 हो जाएगा. तो आगे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैं इधर लिख रहा हूं MNPQ would then be equal to 3 plus 1 is 4, -3 minus 0 is -3, -2 minus 2 is -4, and 0 minus -4 is +4. So our X has come. This is matrix X, 4 minus 3 minus 4, 4. Very simple, very, very simple. पार्ट 2, अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इसको नहीं कर पाओगे. मुझे डेफिनेटली लगता है कि इसको भी तुम लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कर लोगे. इतना सारा जो मैंने बता दिया है, आई होप यू विल बी एबल टू डू इट. स्टिल आई एम सॉल्विंग इट, बट
if you feel that you don't want to see how I'm solving, you want to try it first, then you pause the video and you solve it on your own, and then you resume the video and check whether have you done it correctly or not. So the second, I hope you have paused the video now. एक्स मैं सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो पॉज करने, अपने से सॉल्व करने के बाद ही इसको रेज्यूम करके देखना। एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा हमारा सेकेंड वाला क्या है, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, सॉरी हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है बेटा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, राइट, दिस इज द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a माइनस बी, बिल्कुल ट्रांसपोज कर दिया, x इज a माइनस बी। बिल्कुल उसी तरह से हमने ये हमें पता है कि x इज 2x2 मैट्रिक्स, सो आई एम यूजिंग MNPQ वंस अगेन। A is -1 0 2 -4 minus b, b is 3 -3 -2 0, and solve बस कर देना है हमें। so -1 -3 0 -3 2 -2 and -4 -0। आई होप तुम लोगों ने भी अपने से जो सॉल्व किया है वैसे ही बिल्कुल इसी तरह किया है, एंड योर आंसर इज द सेम एज इट इज कमिंग इन माइंड। सो -1 -3 is -4, 0 -3 0 plus 3 which is just 3, 2 plus 2 is 4, and here it is -4 -0 is -4, and this is our answer, means matrix X is this। चलो, वेरी सिंपल। अब आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। नंबर को हम यहाँ फिजिक्स या मैथ्स में सिंपल नंबर को स्केलर भी बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, या फिर बाय अ रियल नंबर, बाय अ नंबर। ओके, तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, और इसके बाद हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नाउ डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टॉपिक्स, ये दोनों अलग टॉपिक है। ये मल्टीप्लिकेशन टर्म को देखकर दोनों को सेम मत समझना। व्हाट इज इट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 6 9 2, इसको किसी भी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस मींस आई हैव a matrix 4 6 9 2 and another matrix maybe 9 9 8 1, इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर एक दूसरा टॉपिक है। तो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम आगे के लेक्चर्स में करने वाले हैं। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स on matrices, then definitely you have to press the bell icon after pressing the subscribe button and turn on all notifications. Thank you all of you. We will continue with the next lectures. God bless you. Take care, everyone.